traveling to Australia. I repeat again, not traveling to Australia, who are not Australian citizen or Australian permanent residents. So I have mentioned here my kids, the detail of my kids I have shown. मीन के आपने वो बच्चे जो आपकी फैमिली में शामिल हैं, फार्म बे में शामिल हैं और आपके साथ नहीं जा रहे, तो आपने मेंशन करना है यहाँ पे क्लियरली, सो दैट इट डज नॉट मेक एनी प्रॉब्लम एट लेटर स्टेज. I have clicked the next 19 by 9 by 19 into to Australia. Proposed period of stay. Does the applicant intend to enter Australia on more than one occasion? Yes, मैंने yes कर दिया क्योंकि लाजमी नहीं, मैं एक नो करता हूँ मीन कि मैं बैन हो जाता हूँ. आपने कोशिश करनी है yes ही कर देना, ताकि अगर आप जाएं या ना जाएं, लेकिन यह है कि आपने yes करना है. आप नो कर देते हैं. उन्होंने पूछा क्वेश्चन ये है कि क्या आप दोबारा भी ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, मैंने कह दिया yes. How long does the applicant plan to stay in Australia? आप कितने ड्यूरेशन के लिए रहना चाहते हैं यहाँ पे. उन्होंने नोट किया मैंने, if the applicant intends to enter Australia more than once, select the longest period they plan to stay in Australia on a single visit. So I have mentioned I am planning to visit Australia for 1 month, but this is the option of 3 months, minimum 3 months you have to apply. So please see here, when I click here, there are 3 options, up to 3 months, up to 6 months, up to 11 months. So as I have planned 1 month, so I have mentioned, I picked up to 3 months. Okay, next planned arrival date, mean I am going to Australia. I have planned to go to Australia from 15 December to 15 January 2023. I mentioned this is not exact date, so I have proposed. It depends upon on approval of visa, as these dates are required to be mentioned. I have mentioned these temporary. Does the applicant know the dates of entry for each occasion after first entry to Australia? उन्होंने पूछा कि क्या आपको दोबारा जब आप ऑस्ट्रेलिया आएंगे तो क्या उन डेट्स का आपको पता है कब आएंगे. तो मैंने उन्हें रीज़न बता दिए, बिकॉज आई एम एम्प्लॉयड पर्सन एट पाकिस्तान एंड इट डिपेंड्स अपॉन माई लीव वेन एवर माई डिपार्टमेंट्स स्पेयर्स मी, सो आई विल कम. आई डोंट नो एग्जैक्ट डेट्स. नेक्स्ट इज द स्टे while in Australia. Will the applicant undertake a course of study in Australia? अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़ना चाहते हैं तो आपने मेंशन करना yes, because I am not going for a study purpose, so I have mentioned no. And next is the relatives, friends or contacts in Australia. अगर आपके वहाँ कोई रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, तो आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर दें. तो मैंने उनका कॉन्टैक्ट नंबर जो मुझे बुला रहे हैं, मैंने उनका नंबर वहाँ पे मेंशन कर दिया. Now we go to next page. Keep in mind that you have to save your data on each page. You have to click save data, and this is the save button on each click on each page, so your data is does not just last when it is electricity problem in your area. I have gone to I have proceeded to next page. Next page is 11. Visa applicants current overseas employment. करंट एम्प्लॉयमेंट मुझसे पूछ रहे हैं आप कहाँ पे हो. मैंने अपना बता दिया, मेरी अपॉइंटमेंट मैंने बता दिया. इसके अलावा मैंने अपनी एड्रेस बता दिया, किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ और मैं कब से काम कर रहा हूँ. ठीक हो गया. उसके अलावा मेरी ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस क्या है वो मैंने मेंशन कर दिया, इस्लामाबाद फलां 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 फलां. ठीक हो गया. सब टोन प्रोविंस मैंने पंजाब लिख दिया, कैपिटल में लिख दिया, पोस्टल कोड लिख दिया, फ़ोन नंबर मैंने अपना लिख दिया, बिजनेस का मेरा कौन सा है और मेरा मोबाइल नंबर कौन सा है वो मैंने मेंशन कर दिया, बिजनेस का भी मेंशन कर दिया, मोबाइल का भी मेंशन कर दिया. इस तरह उन्होंने मुझे ईमेल देखें, ईमेल मेरा कम हो बेश इस एप्लीकेशन में 6 दफ़ा पूछ चुके हैं. हर पेज पर लिखनी पड़ती है, लेकिन आपने इंश्योर करना है हर बार कि आपका कोई भी छोटी सी मिस्टेक आपके लिए प्रॉब्लम न बने. सो आई एम प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट पेज. Next page is a 12 page financial support. Okay, they have asked give details of how the applicant stay in Australia will be funded. वो पूछते हैं कि आप जो ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं आपकी कैसे होगा, कैसे वहाँ पे आपका स्टे चलेगा. ठीक है.
Self-funded as supported by a current overseas employer, supported by other organizations, supported by any other person. So this is self-funded. I'm taking 20,000 Australian dollar to there for visit purpose. Uh, it depends upon your visit how much expenditure it involves, but you have to mention, so it does not make any problem at airport when you're taking huge money with you. So I am going to next page. Next page is 15. It's health declaration. आपकी जो सेहत है उसके बारे में पूछ रहे हैं. In the last 5 years, has any applicant visited or lived outside their country of passport for more than 3 consecutive months? Do not include time spent in Australia. As I have not spent any time in Australia, so I have mentioned no. Next question is, does any applicant intend to enter a hospital or a healthcare facility including nursing homes while in Australia? Alhamdulillah, I am healthy. I have taken no. Does any applicant intend to work as or study or train to be a healthcare worker or work within a healthcare facility while in Australia? I have taken no. Does any applicant intend to work, study or train within aged care or disability care while in Australia? No. As any applicant mean के जितने भी any applicant जितने भी ग्रुप में मेंबर हैं सबके लिए ये सर्टिफिकेट होता है. Ever had or currently have ट्यूबरकुलोसिस मीन कि आपको टीबी वगैरह हुई है तो उसके बारे में बताएं. ट्यूबरकुलोसिस के बारे में क्लोज किसी फैमिली में किसी मेंबर को ये भी बतानी होती है. हैव एवर हैड अ चेस्ट एक्सरे विच शोड एन abnormality? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हेल्थी. अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने अपना नो कर दिया. ड्यूरिंग देयर प्रपोज विजिट टू ऑस्ट्रेलिया, डज एनी एप्लीकेंट एक्सपेक्ट to incur medical cost or require treatment or medical follow-up? These are few diseases they have mentioned, and the tests: blood disorder, cancer, heart disease, nasal hepatitis B and C, or liver disease, HIV infection including AIDS, kidney disease including dialysis, mental illness, pregnancy, respiratory disease that has required hospital admission or oxygen therapy, others. I have mentioned no. It depends upon your health. Does any applicant require assistance with mobility or care due to medical condition? अगर आपको मसला या इशू है मेडिकल का, क्या आपको कोई असिस्टेंट चाहिए? अगर चाहिए तो यस कर दें, मुझे नहीं चाहिए इसलिए मैंने नो कर दिया. So I am going to next page. Next page is 16. Character declaration. This is a very important point. Character declaration. In Pakistan, it's very difficult to be a character to get character certificate. Anyhow, character declaration. If the applicant answers yes to any of the character declaration, they must give all relevant details for combined application state which application the declaration applies to. So ये आपने तमाम जो ग्रुप में जा रहे हैं सबके बारे में बताना होता है कि आपके ग्रुप में जो बंदे जा रहे हैं उनके लिए कैरेक्टर के बारे में वेरिफिकेशन होती है. इफ द मैटर रिलेट टू ए क्रिमिनल कन्विक्शन, प्रोवाइड द डेट एंड नेचर ऑफ ऑफेंस, फुल डिटेल्स ऑफ सेंटेंस, dates of any period of imprisonment or other detention. So this is for those purpose who know the English. If anyone going to Australia, it means he knows better. मीन कि वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने क्या कौन सा ऑफेंस किया था, उसकी डिटेल दें, किस डेट को आपने ऑफेंस किया था, क्या उसको ऊपर आपको कोई सजा भी हुई थी, तो तमाम चीज़ें मेंशन करनी पड़ती हैं. हैज़ एनी एप्लीकेंट एवर बीन चार्ज्ड विद एनी इन्फ्लुएंस दैट इज करंटली अवेटिंग लीगल एक्शन? क्या कोई आपने काम किया हो जिसके ऊपर आपके ऊपर कार्रवाई रहती है, किसी ऐसे चार्ज लगा हो जो आपकी कार्रवाई रहती हो, वो भी अपने मेंशन करता है. हैज़ एनी एप्लीकेंट एवर बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन एनी कंट्री, किसी और मुल्क में जाकर आपने कोई ऑफेंस किया तो उसका रिकॉर्ड भी आपने देना होता है. हैज़ एनी एप्लीकेंट एवर बीन द सब्जेक्ट ऑफ अ डोमेस्टिक वायलेंस और फैमिली वायलेंस ऑर्डर और एनी अदर ऑर्डर? ये तमाम चीज़ें आपने मेंशन करनी होती हैं जो आपके डिसिप्लिन रिलेटेड होती हैं. हैज़ एनी एप्लीकेंट एवर बीन द सब्जेक्ट ऑफ an arrest warrant or Interpol notice? Has any applicant ever been found guilty
of a sexually based offense involving a child, मीन चाइल्ड अब्यूज से भी उन्होंने किलर कट लिखा हुआ है. सेकेंडली, हैज एनी एप्लीकेंट एवर बीन नेम्ड ऑन ए सेक्स ऑफेंडर रजिस्टर, क्या आप किसी ऐसे जना के जना बिल जबर के या जना के मरतकब हुए हैं तो आपका लिखा होगा ये भी रिकॉर्ड में. जो लोग इस तरह के कामों में मुलवस हैं तो उनकी यार सजा भी लिखी होती है, तो कोशिश करें इन ऑफेंसेस से बच करें. नेक्स्ट, हैज एनी एप्लीकेंट एवर बीन एक्विटेड ऑफ एनी ऑफेंस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ unsoundness of mind or insanity. Next is has any applicant ever been found by a court not fit to plead? Next, has any applicant ever been directly or indirectly involved in associated with activities which would represent a risk to national security in the Australia or any? ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपके पाकिस्तान में भी रिक्वायरमेंट है. आपका करेक्टर अच्छा होना चाहिए, आपके पास कोई खुजा नहीं होनी चाहिए. तमाम जो भी मैंने थे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नो कर दिए हैं. कोई सजा नहीं, अगर किसी हुई है तो आपने मेंशन करनी है. इसी तरह आपने एंड पर अपना नाम लिखना होता है, कंट्री है, ठीक हो गया. आपने इनकेस आप आर्मी में रह रहे हैं तो आप मेंशन करना है. मैंने पूरा मेंशन कर दिया, मैं किस ड्यूरेशन से किस ड्यूरेशन तक आर्मी में रहा हूँ, ठीक हो गया, वो मैंने मेंशन कर दिया. ये तमाम चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं. नेक्स्ट इज हैज एनी एप्लीकेंट एवर बीन इन्वॉल्व इन पीपल स्मगलिंग. हाँ जी, बंदों की स्मगलिंग में कोई बंदा इन्वॉल्व है तो वो भी यहाँ पे नो है. हैज एनी एप्लीकेंट एवर बीन रिमूव्ड, डिपोर्टेड और एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनी कंट्री इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया. क्या कोई बंदा एयरपोर्ट से डिपोर्ट हुआ है या किसी मुल्क से जाकर डिपोर्ट हुआ है तो वो भी इनएलिजिबल है फॉर ऑस्ट्रेलिया वीज़ा. एज एनी एप्लीकेंट एवर ओवर स्टेट अ वीज़ा. अगर कोई बंदा बाहर जाता है, आप वहाँ पे जाके ऑस्ट्रेलिया में जाके या बाहर किसी और मुल्क में जाते हैं, 3 महीने का वीज़ा लेते हैं, 6 महीने का वीज़ा लेते हैं और वहाँ पे ओवर स्टे करते हैं, वो भी आपने मैनेजमेंट करनी होती है. एज एनी एप्लीकेंट एवर हैड एनी आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स इन द ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट. अगर आपने कर्ज लिया हुआ है तो वो भी आपने बताना है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से. ये वो चीज़ें हैं जो आपने मैंशन करनी है. Next is I think is the nearly completing. Next page, has the applicant held or does the applicant currently had a visa to Australia or any other country? Any other country का वीज़ा लगा हुआ तो ज़रा मैंने ऑलरेडी USA विजिट किया, मैंने अफ्रीका विजिट किया, वो मैंशन किया, मेरे पास वीज़ा था वो मैंने मेंशन कर दिया. इसी तरह अगर आपका नहीं है तो आपने यहाँ पर डिटेल नहीं देने, नील कर देना. हैज़ द एप्लीकेंट एवर बीन इन ऑस्ट्रेलिया or any other country not complied with visa condition or departed outside their authorized period of stay? ये भी आपने मेंशन करना, मैंने नो कर दिया. हैज द एप्लीकेंट एवर हैड अ वीज़ा फॉर ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर कंट्री रिफ्यूज्ड और कैंसिल. किसी का रिफ्यूज हुआ वीज़ा, किसी का कैंसिल हुआ तो वो भी आपने मेंशन करना होता है. नो, दिस इज द 17 पेज. नेक्स्ट गोइंग टू 18 पेज. 18 पेज उन्होंने हाइड रखा हुआ है, वो उनके रिलेटेड है. हमारा 19 पेज है. ये वार्निंग उनको दी है. गिविंग फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन इज अ सीरियस ऑफेंस. द एप्लीकेंट डिक्लेयर दैट दे हैव रीड द अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू देम इन दिस एप्लीकेशन. आपने तमाम वो चीज़ें आपने पढ़ ली हैं, आपने तमाम जितनी भी इंस्ट्रक्शन है केयरफुली पढ़ लेनी, कोई मिसलीड नहीं करना, कोई आपने गलत इन्फॉर्मेशन देनी, अदरवाइज आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा. ये तमाम वो चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया. आपने कैसे फिल करना, ऑनलाइन फिलिंग करना, तमाम के तमाम आपने इसके साथ डॉक्यूमेंट भी अटैच होते हैं, वो भी मैं मेंशन करता हूँ. ठीक हो गया. तो उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगेगी. अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो काइंडली आप उसको शेयर कीजिए और इन्हें आपने सब्सक्राइब लाजमी कीजिए. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम सर, क्या हाल है?